children, how are you? I hope you all are doing well. And are you reading the different chapters of English? Very well, children. Do practice reading, writing and talking also in English. Okay? Now let's see what is there in store in this chapter. What are we going to learn in this chapter? The chapter's name is The Real Courage. So let's look at the prologue. Bravery does not mean being reckless. One needs to be alert and take appropriate steps when it matters the most. There is no point in proving your bravery all the time to all the people. Courage is not about fighting fear or danger, but being able to overcome it when it matters the most. So बच्चों, हम हमेशा brave होते हैं, courageous होते हैं, but हमें prove करना ज़रूरी नहीं होता है. कोई भी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें bravery दिखानी है या we have to show that we are courageous. Okay, that is the situation when it matters the most how brave or how courageous you are. आपको बार बार लोगों को prove करने की ज़रूरत नहीं होती है. Okay, so now let's read this chapter to understand what is this chapter going to tell us about being courageous or being brave. Okay, so before we read this chapter, we will start with the warm-up. Okay, overcoming stage fear, standing up and speaking publicly are tough tasks for some children. Have you ever faced such a situation? Share it with the class. So बच्चों, जब हमें स्टेज पे खड़े रह के बात करनी होती है या डांस करना होता है या कुछ भी एक्टिविटी करनी होती है, तो do we face it bravely or are we scared? आपके साथ कभी ऐसे सिचुएशन हुए कि आप डर गए हो? Please discuss with your classmates and your teacher as well. Okay? Now the teacher's tip. The teacher should call some students to speak on the given topic. The teacher must encourage the students to express themselves. So बच्चों, आपकी टीचर्स भी आपको कभी कभी बोलती होगी सामने आके खड़े रह जाओ, इस टॉपिक पे बात करो, तो क्या आप डर जाते हो? और अगर आप डरते हो तो आप शुरुआत कैसे करते हो? And then do you feel that slowly and gradually your fear is going away and you're able to face everyone very courageously, very bravely and very confidently? Great. So that's how you will change yourself. You will gain your confidence. बच्चों, डर तो सबको लगता है, but उस डर का सामना हम कैसे करते हैं? That is very important. Now let's read the story. The best man in the whole tribe is Dave, the brave. Everyone would say. You could see for yourself at any time of the day just how brave he was. He would jump to the ground from amazing heights. He would fight poisonous snakes. He would catch scorpions with his bare hands and could cut the palm of his own hand with a knife without even a flinch. तो देव करके एक लड़का है, एक ट्राइब में रहता है, काफ़ी ब्रेव होता है. ओके, वो कहीं से भी कूद सकता है, कितनी भी ऊंचाई से कूद सकता है, पॉइजनस स्नेक्स को पकड़ सकता है, उनके साथ मुकाबला कर सकता है. ओके, स्कॉर्पियंस को पकड़ सकता है, जो बिच्छू होते हैं ना उन्हें, और अपने हाथ को भी नाइफ से काट सकता है. But children, mind you, this is a very dangerous act to do. Okay, so do not attempt doing something like this. It's just not right to do it. Okay, it's very dangerous. So do not do what Dave used to do, at least from this aspect. They said the exact opposite about Rajbir. No one had seen him catch even a monkey. One day, they happened to cross upon each other in the forest. So, राजबीर करके जो था वो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट था. किसी ने उसको कभी मंकी को पकड़ते हुए भी नहीं देखा था. ओके, तो एक बार ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते फॉरेस्ट में. Dave was showing Rajbir a coral snake he had just caught when there began a downpour, the likes of which no one had ever seen. Both of them ran to shelter themselves under some thick foliage and stayed there until the rain stopped. तो देव जो होता है वो राजबीर को उसने पकड़ा हुआ कोरल स्नेक दिखा रहा होता है, तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो जाके नीचे पेड़ के नीचे छुप जाते हैं और शेल्टर लेते थोड़ी देर के लिए जब तक बारिश रुकती है. However, when they were about to leave the shelter, they heard the roar of a tiger nearby. Okay, जैसे वो वहाँ से निकल रहे थे उन्हें एक टाइगर की आवाज़ आई. The foliage was thick and dense and the tiger would not have been able to get through it to attack them. But
The tiger was almost at the entrance of the hole. तो जहाँ पे वो छुपे थे, वो foliage जो था जहाँ पे वो लोग छुपे थे, उसके एंट्रेंस, वो होल के एंट्रेंस के पास ही उन्होंने टाइगर की आवाज़ और क्लियरली सुनी. मतलब टाइगर उस एंट्रेंस के पास था. If it had happened to come in and find the two tribesmen there, they certainly would not get out alive. Okay? अगर टाइगर को पता चलता है कि ये दो ट्राइब्समैन उसके अंदर छुपे तो वो बच नहीं पाते. Dave was getting restless. He wanted to get out of that hole and confront the tiger in open space so that he could display his great hunting skills. Rajbir gestured at him to keep still and be quiet. But Dave, tired of being stuck with a coward, leapt out of the thicket, surprising the tiger. तो देव जो था वो काफ़ी रेस्टलेस हो रहा था. उसको तो आदत थी ऐसे सब चीज़ों का सामना करने की, तो काफ़ी रेस्टलेस हो रहा था. उसको उस होल से बाहर निकलना था और टाइगर को कन्फ्रंट करना था. बट राजबीर जो था वो उसको इशारा करके बोल रहा था कि रुक जाओ, शांति से बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए. बट देव उसको वहाँ से कैसे भी करके निकलना था और उसने क्या किया, उसने टाइगर के ऊपर छलांग लगा दी. Okay, now let's see how much is followed by doing the performance tracker. So you have to start quickly answering these questions which are in the performance tracker, and then we will move ahead with the story. Okay, so now let's move ahead with the story. The tiger suffered a couple of wounds but soon recovered. It hurt Dave with 2 swipes of its paw and threw him on the ground. The tiger took the initiative and leapt upon Dave. But Dave's spear in the hands of Rajbir interrupted the tiger's attack. The tiger turned away wounded, but the spear moved as fast as a beam of light and with incredible precision hurt the animal again and again until it fell to the ground lifeless. Dave, shocked and bleeding heavily from his injuries, witnessed all these while lying flat on his back on the ground. Never before had he seen anyone take on a tiger and use the spear with such calmness and strength as he had seen Rajbir do just now. तो देव जब रेस्टलेस हो जाता है, टाइगर के ऊपर छलांग लगा देता है, तो टाइगर और देव के बीच में फाइट शुरू हो जाती है. अब देव को भी चोट लगती है, टाइगर को भी चोट लगती है. देव ज़मीन पे गिर जाता है, उसको टाइगर्स के जो पॉज होते हैं वो लग जाते हैं. ओके, और तभी ही देव का जो भाला होता है, उसका जो स्पीयर होता है, वो लेके आ जाता है राजबीर और वो टाइगर को उससे पोक करने लगता है, उसके हिट करने लगता है. ओके, सो ही स्टार्टेड हिटिंग द टाइगर विद दैट स्पीयर and the tiger was bleeding, okay, and he had lot of injuries and finally he just died. Okay, अब Dave was shocked. Okay, he was bleeding also because obviously अगर आप टाइगर के साथ फाइट करोगे तो आपको चोट तो लगेगी, चोट लगेगी, ब्लीडिंग होगी तो इंजुरीज हो जाएगी. तो उसको काफ़ी इंजुरीज हो गई थी. बट ही वॉज शॉक टू सी कि राजबीर जो इतना शांत था, इतना काम था, उसने उस स्पेयर को कैसे यूज़ किया, कैसे उसने उस टाइगर का सामना किया एकदम ब्रेवली और उसको मार दिया. Neither of them said a thing. Dave's grateful expressions needed no words to be understood, nor did they need any words to know about Rajbir's wounded hand or the fact that they were leaving a dead in the forest. From that day on, people gradually remarked less on Dave's bravery. They thought that maybe he was less courageous than before. Strangely, they now noticed that Dave's old spear was among Rajbir's things. But Dave just smiled and remembered the day he learned that true bravery lay not in seeking our danger, but in controlling one's feet when danger crosses your path. So बच्चों, जब ये सारा हादसा हो गया, वो टाइगर डेड हो गया, Dave was pleasantly शॉक्ड और सरप्राइज्ड यू कैन से, क्योंकि उसने देखा कि राजबीर ने कितने कामली वो स्पेयर को हैंडल किया, उस टाइगर को मारा. ओके, तो उसके बाद जब वो फॉरेस्ट से वापस आ गए तो सिचुएशन पूरी चेंज हो गई थी. लोगों ने अभी देव की ब्रेवरी के बारे में जो पहले इतनी सारी बातें करते थे, बातें करनी
कम कर दी। उन्हें लगा कि मे बी वो थोड़ा कम करेजियस था, कम ब्रेव था, बट उन्हें पता था कि एक्चुअली क्या हुआ है। देव न्यू, राजबीर न्यू, एंड जो देव का जो स्पीयर था वो उसने राजबीर को दे दिया था। इट वॉज वन ऑफ द बिलोंगिंग्स ऑफ राजबीर नाउ, and Dave used to just smile, and he always remembered the day that he learned that true bravery lay not in seeking our danger but in controlling one's feet when danger crosses your path. मतलब उसको ये समझ में आया कि ब्रेवरी वो नहीं होती कि हर सिचुएशन का सामना आप जस्ट उसके ऊपर कूद के करो या जस्ट नॉट बी बॉदर्ड और जस्ट गेट इनटू इट, वैसे नहीं। बट उस सिचुएशन को कितने कामली, कितने ब्रेवली राजबीर ने फेस किया, वो देख के, वो सोच के देव हैड चेंज्ड हिमसेल्फ. So children, even you remember this thing. You don't have to jump into conclusions or jump into any situation, okay, and face it just, not bothering about what will happen. आपको सोच समझ के calmly, quietly, okay, उस situation को face करनी है, and that's when it will show your true bravery. Okay, children, so now quickly start reading the important words, practicing the difficult words, and doing the back exercises.